खाने का। इट इज़ अ प्योर सिन, क्योंकि जैसे ही हम डिज़र्ट खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, तो हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होता है एंड इट वी बिकम स्ट्रेस फ्री। तो आज हम बनाने वाले हैं बनाना पैनकेक, बट येस ऑफ कोर्स विद होल व्हीट फ्लावर, जिसके लिए हमने लिया है होल व्हीट फ्लावर 1 कप, बनाना जिसे हम अभी मडल करेंगे, मैश करेंगे, शुगर, कुकिंग सोडा, थोड़ा सा वनीला एसेंस, आई नो वनीला सबका फेवरेट होता है, एंड ऑफ कोर्स जब आपका भाई कनाडा हो तो ये बहुत फ़ायदा होता है, आई गॉट द मेपल सिरप एंड लेट मी स्मेल इट, दैट्स लवली। सो लेट्स स्टार्ट, इट्स अ वेरी इजी रेसिपी, लेट्स स्टार्ट। एक बोल लेते हैं, बोल में डालते हैं हम होल व्हीट फ्लावर, इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ी शुगर, बटर, pinch of baking soda, and let us keep aside for some time so that the sugar gets melted evenly. हम चाहे तो इसमें कैस्टर शुगर भी डाल सकते हैं। तब तक हम बनाना को मॉडल कर लेते हैं। बनाना के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको स्मेल करते ही आवर माइंड फील्स रिलैक्स्ड। इसे हम मिक्स करते हैं अपने बैटर में। इसमें डाल देते हैं थोड़ा वनीला एसेंस, वनीला एसेंस आई थिंक सबका फेवरेट है। चाहे तो इसकी कंसिस्टेंसी और कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं पानी डाल के। Just keep aside for a few minutes and then we'll make pancake out of it. So let's take a pan. जब तक हमारा pancake batter ferment होता है, एक पैन लेते हैं और इसमें डालते हैं थोड़ा सा मेल्टेड बटर, आप घी भी ले सकते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे थोड़ी सी शुगर, इट विल बी गुड अगर आपके पास ब्राउन शुगर है, और इसमें डालेंगे बनाना को हम करेंगे कैरामलाइज। बनाना
consistency. Although हम dessert खा रहे हैं, but please also keep in mind कि हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक ना करें. Caramelized हो रहा है थोड़ा सा, जैसे हम सॉटे करते हैं, and it smells so good. Let us keep it aside. और इसी पैन में हम थोड़ा सा घी या बटर डाल के हमारे बैटर से बनाएंगे पैनकेक.